So, as you know that I'm doing previous year questions from state PSCs, and in this lecture series we are dealing the questions of Indian polity. Okay, so preamble is running. Okay, this is actually I'm making after a very long time video because my laptop got damaged due to rain. So I brought a new one. So sorry for the delay of the videos. So from now onwards, uh, I will try to upload regular videos. Okay, so anyway, those who are following me, to them especially sorry for from my side. From now onwards, you will see a lot of videos in this channel. Anyway, so maybe today we'll complete the preamble questions and we'll start the new chapter. Okay, so as you know that I'm doing the last 30-year questions from different PSCs like UPPCS, Bihar PCS, MPPCS, whatever PSCs, Uttarakhand PCS, Chhattisgarh PCS. Not only PCS exam, is other PSCs exams. I mean, the PSCs are taking other exams as well. So anyway, topic is same, so it doesn't matter which exam it is. So, but my target audience is mainly those who are preparing for civil services examination, whether it is UPSC or whether it is state PSC. Okay, this lecture series also contains the questions of UPSC as well. Anyway, you know that about myself. I did master from IIT Bombay, and I am the former assistant professor. Okay, so anyway, I took almost 2 minutes for this introduction part because of I have stopped uploading the videos. Okay, but from the next video onwards, the introduction will be very some 10-15 second maximum. Okay, so anyway, we'll start today's questions. Okay, so let's see. Fine. So yeah, so question number 36 from preamble is who has term constitution or scare document. Okay, so B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Deen Dayal Upadhyay, Muhammad Ali Jinnah. Okay, so किसने बोला कि it's a scared document? Okay, so it is actually B.R. Ambedkar. He said that the preamble is a scared document. Why he said that? Bhimrao Ambedkar in 1947 became a chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India. Ambedkar was okay. He was very good constitutionalist because he has done a lot of study related to law, and about Ambedkar. So I don't think it's required to tell. He believed that the government must be constitutional and the constitution must be treated on the basis of scare document. Okay, so it was the B.R. Ambedkar. So answer is A. Next, which of the following cases Supreme Court held that the preamble form part of the constitution? ठीक है, देखिए उस समय ऐसा भी था कि whether preamble is the part of constitution or not, क्योंकि वो किसी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, वो शुरुआत में ही एकदम से दिया हुआ है. Okay, so फिर कई cases होते थे whether it is a part of constitution or not. So that they're asking, preamble forms part of constitution. Okay, so किस केस में ऐसा बोला गया था? So Union of India versus Dr. Kohli, Banarsi Das versus State of UP, Bombay versus Union of India, and Malak Singh versus State of Punjab. Okay, so those who are reading, if you have little bit study about polity, कुछ भी थोड़ा बहुत सुने होंगे तो कभी ना कभी सुना होगा, इट्स बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर आप कोई सा लेक्चर वगैरह भी देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो अगर प्रियम्बल की बात हो रही है तो ये बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है. Okay, so please remember this. Fine. So in case of SR Bombay versus Union of India 1994, the Supreme Court held that the preamble is the integral part of the constitution. ठीक है, इस केस में बोला गया था कि it's integral part of constitution even though it is not given in the articles. In the case of Kesavananda Bharati case versus State of Kerala in 1973, a bench of 13 judges of Supreme Court outlined the basic structure of doctrine of the Constitution of India. ठीक है, अब कई बार ऐसे पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन किस केस में आया था? इट इज केसवानंद भारती केस. ओके,
and the preamble is a part of Indian Constitution. It has been cited by the Supreme Court in the case of SR Bommai case. Okay, so please remember these two things. You will see these things, in many of time while studying the polity. Okay, next question. In which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not the part of Constitution? ठीक है, और कौन से केस में बोला था कि it is not a part of Constitution? So Berubari case, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस. तो केशवानंद तो नहीं होगा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली बेरूबरी केस. ठीक है, तो अब दो चीज याद रखिए. बोम्बई केस में बोला था कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बेरूबरी के केस में बोला था कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए आप, कई बार ऐसे इवेंट्स को बोलता है कि ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए. अब देखिए यहाँ पे बेरूबरी केस 1960 में हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, बट ऐसे जब चार ऑप्शन दे देगा बोम्बई, बेरूबरी, केशवानंद भारती केस, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होता है. तो ऐसा आप याद रखिए यहाँ पे कि बेरूबरी पहले आया था जिसमें बोला गया था कि preamble is the not a part of constitution. ठीक है, मुंबई में बोला गया था कि it is a part of. बेरूबरी पहले आएगा. ठीक है, so it is actually Berubari case where the Supreme Court said that it is not the part of preamble is the not the part of constitution. Next, फिर से I think in which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as the part of basic structure of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर प्रिएम्बल के बारे में पूछ लिया कि वेदर इट इज किस केस में बोला गया इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस में बोला गया था. ओके, सो इट्स अ बेरूबरी केस, AK गोपालन केस, प्रीवी पर्सी केस एंड केशवानंद भारती केस. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डी वाला होगा आंसर इसका. देखिए ये लेक्चर सीरीज जब आप कर रहे होगे तो आपको कई क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि ये तो रिपीट हो रहा है सर, इसको बार बार क्यों करवा रहा है. इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, इवन अगर वो सेम एग्जाम में आया है तो डिफरेंट ईयर्स में आया हुआ है, तो उससे आपको ये पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज. अगर वो कई बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो नेक्स्ट एग्जाम वहां पे आ जाए वो. तो इस वजह से इवन इफ इट इज रिपीटिंग यू जस्ट लर्न दैट you will memorize for longer time. Okay, so preamble was regarded as the part of basic structure of the Indian Constitution by the Supreme Court in केशवानंद भारती केस. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आया ही था केशवानंद भारती केस के बाद से. ठीक है, तो जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वो केशवानंद भारती केस ही होगा. ठीक है, कई बार अगर ईयर की बात होती है तो इट्स लाइक 1973. ठीक है, तो वो इट्स बर्थ ईयर ऑफ सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर भी 1973 में पैदा हुए हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. ठीक है, बेरूबरी 1960. ओके, देखिए अब जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें बोल रहा है. ठीक है, अब हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों तो पता है कि 24th पहले आएगा, 42nd बाद में आएगा. अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा. ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमारा जो सबसे पहले हमारा आया हुआ है वो इट केम. अब देखिए यहाँ पे जो 24 और केशवानंद भारती केस, अब इसमें नहीं पता कि पहले कौन सा हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले आया था गोलकनाथ. ठीक है, उसके बाद हुआ था हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद हमारा हुआ था केशवानंद भारती केस. फिर सबसे लास्ट में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, आपको पता है कि उस समय इमरजेंसी वगैरह लगी हुई थी, तो उस टाइम पे ये हुआ था. फाइन, सो इस तरीके से अगर आप मैच करोगे 1 2 1, मतलब ये तो हमारा पहले आ जाएगा 3, then 2 and 4. सो इसका आंसर हो जाएगा A. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, गोलकनाथ केस was decided on 27th February 1967.
Kesavananda Bharati case was decided in 1973. The Constitution 24th Amendment Act 1971 was passed on 5th November 1971. ठीक है, उसके बाद हमारा Constitution 42nd Amendment Act 1976 was passed in 1976. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में 24 यहाँ पे देखिए टच क्या है थोड़ा सा, सेकंड एंड फोर्थ केशवानंद भारती केस और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे हम लोग मतलब कोई लोग 1 2 3 4 भी मार के आ सकते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, economic justice as one of the objective of Indian Constitution has been approved in the preamble and the fundamental rights, the preamble and the DPSP, the fundamental rights and DPSP, none of the above। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक जस्टिस है ये किस में बोला गया है वो चीज पूछ रहा है, तो इट इज एक्चुअली preamble and DPSP। ठीक है, इट इज नॉट अ जस्टिसेबल, इकोनॉमिक जस्टिस में ये जस्टिसेबल नहीं है, बट yes, yeah, it is given in the DPSP as well as in the preamble. So preamble explicitly provides for economic justice as an objective of Indian Constitution. The part of DPSP, on other hand, contains several articles which provides for the economic justice, that is Article 38 clause 1 says the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting and effectively as it may social order in which justice, कौन सा justice, social, economic and political। ठीक है, preamble में सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, और ये 38 में हमारा ये चीज दिया हुआ है, shall inform all the institution of the national life। ओके, तो जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है वो आप अगर आप प्रेम्बल पढ़ोगे उसमें भी दिया हुआ है, एंड ये जो हमारा आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है उसमें भी दिया हुआ है। ओके, सो द आंसर इज बी। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी वाला थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा पूछता है, तो वी शुड कीप इन द माइंड। ओके, next, the ideals and objective outline the preamble of Indian Constitution have been further elaborated in, okay, preamble of Indian Constitution। okay, ideals and objective outline of the preamble वो किस में दिया हुआ है, जो preamble में outline दिया वो किस में दिया हुआ है। okay, so the chapter of fundamental rights, the chapter of DPSP, the chapter of DPSP of the DPSP and the fundamental right and fundamental duties, nowhere else in the text of the Constitution। ठीक है, तो देखिए इसको जो हमारा the idea and objective outline of the preamble, it is actually given in both, I mean not only both, the DPSP, fundamental rights and fundamental duties, तीनों में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे, अगर ये तीनों चीजें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि what, अगर आप preamble पढ़ो, फंडामेंटल राइट पढ़ो और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ो, तो आप काफी कुछ चीजें उसमें सिमिलर मिलेंगी। ओके, so the main objective of the Constitution is to secure justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity to all citizens। ये तो हमारे देखिए सीधा सीधा preamble में ही दिया हुआ है। The advancement of the people should not be paired to the advancement of the nation, so the promotion of fraternity is also aimed in the Constitution। ठीक है, so the fraternity भी हमारा दिया हुआ, उस जो हमारे Constitution का एम है, वो जो भाईचारा जिसको fraternity बोलते हैं, ब्रदरहुड होता है fraternity। ठीक है, kind of brotherhood। the ideals and the objective outlined by the preamble are included in the chapter related to the fundamental right। ठीक है, fundamental right में भी देखिए जब हमारा Constitution नहीं बना था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जब ये लोग बना रहे थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब पहली बार आई वहां पे बैठी, तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, आई मीन प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वो चीज असेंबली में एक्सेप्ट किया गया, उसको पास भी किया गया।
दैट वाज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अगर आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की लाइन पढ़ोगे तो इट इज एक्चुअली उसमें सीधा सीधा जो फंडामेंटल राइट्स में चीजें हैं वो सब चीजें उसमें मेंशन है, ठीक है। तो और वही चीज जो उसमें है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो चीजें हैं उसको ही प्रेम्बल के रूप में रखा गया, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ओके। एंड ऑब्वियसली DPSP, okay, for the DPSP actually for the welfare of the people, I mean state, obviously state में कौन लोग हैं, people हैं, okay. So that's why all three is I mean we have to include all three, like DPSP, fundamental rights, and the fundamental duties. Next, the mind of the maker of the Constitution of India is reflected in which of the following: the preamble, the fundamental rights, DPSP, fundamental duties. ठीक है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो प्रेम्बल ही होगा। सो द आंसर इज प्रेम्बल। प्रेम्बल में कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैंने अभी इससे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाली जो बात बोली है वहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही चीज है, फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, पार्लियामेंट, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात इसका आंसर बी होगा, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी कुछ मैंने इसमें बता दिया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्योर इन द प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ओके, 2, 3, 1, 4। So we know that there is a three type of justice: social, economical, and political. Okay, so social, economic, and political. There is three type of justice has been given in the preamble. Okay. Next, what is the legal nature of preamble of the Constitution? It is enforceable. It is not enforceable. It may be enforced in special circumstances. None of above. Okay, तो देखिए इसका आंसर भी हुआ, इट इज नॉट इन्फोर्सिबल एज सिमिलर एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेम्बल में जो लिखा है अगर वो किसी का वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करोगे अंडर आर्टिकल 32, ओके, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, जिसमें रिट्स वगैरह यूज करता है। तो ये चीज सिर्फ फंडामेंटल राइट में यूज होता है, बट प्रेम्बल में या DPSP में नहीं होता। Okay, so it is, the preamble is not enforceable. Please remember this. One of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy. ठीक है, तो yeah, so commission judiciary, centralization of power, elected government, separation of power. Okay, so इसमें देखिए क्या बोला, which of the following factors constitutes the best safeguard of the liberty in the liberty, separation of power, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है। सो अब जहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, विल जस्ट रीड दैट, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सेपरेशन ऑफ पावर ही होता है। इन द लिबरल अप्रोच, देखिए जैसे कि आप चाइना को उठा लो ना, चाइना में क्या है, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जैसे कि वहां पे सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे कंट्री को चला रही है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओगे तो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, फिर अगर आप विलेज लेवल पे जाओगे तो पंचायत होता है। तो पावर को पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंदा जो टॉप पे बैठा वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो डेमोक्रेसी में ऐसा, लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। लिबरल डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर होता है। ओके, सो which is inherent in the democracy, all form of power are rooted in the will of the people. This approach enhances the rule of law as on the basis of fundamental of foundation of democracy. It affirms the separation of powers as a vehicle
for their restraint, and it promotes individual rights and freedom as prerequisite for their dignity. ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो भी राइट्स हैं अगर वायलेट होता तो आप जाके उसको ना इन्फोर्स करा सकते हो, वो चीज हमारा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन अगर आप जो ऐसी डेमोक्रेसी जो लिबरल नहीं है वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो कमिटेड जुडिशरी विल नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर एक तो मैंने जो आपको बताया कि वो, बट इसमें जैसे कि हमारा यू नो एक और चीज जैसे कि हमारे एक्सिक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है, तीनों चीजें होती है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो एक्सिक्यूटिव मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसके काम में जुडिशरी इंटरफियर नहीं करेगी, और जो जुडिशरी का काम है उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकते, दोनों का पावर अलग अलग है। ठीक है, सो centralization of power refers to setup in which the decision making power are concentrated in a few leaders at the top of the organizational structure that may lead to authoritarian, जैसे कि मतलब जैसे राजा लोग पहले होते थे ना, उसकी बात कर रहा है, जो हमारा सेंट्रलाइज पावर होता है, उसमें जो लोकल लोग जो होते हैं छोटे लोग होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, elected government is expected to ensure liberty, but not the best safeguard to ensure liberty। अब उसमें ऊपर से जो ऑर्डर हो गया वो पूरा फॉलो होगा, बट लिबरल में ऐसा नहीं होता है। कोई कोर्ट चला जाएगा, फिर बोल PIL फाइल कर देगा, तो फिर वो चीज कई बार आप देखते हो कि गवर्नमेंट के कई डिसीजंस होते हैं तो उसके अगेंस्ट में लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो फिर बाद में कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी को जबरन या जबरदस्ती उसको ऊपर इन्फोर्स करने की कोशिश की गई है तो वो वापस हो जाता है। ठीक है, कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता है। ऐसा हमारे बहुत से केसेस बहुत बार हुआ भी है। ठीक है, सो one of the implication of equality in society is the absence of privileges, restraint, competition, ideology। ठीक है, अब देखिए IAS वाला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा ही रहता है। सो one of the implications of equality in society in which absence of privileges। ठीक है, इसका आंसर ये होगा the principle of equality is largely confined to the test of eradication special privileges that was evident in the fact that call for formal equality were first made in the hope of the breaking down the hierarchy of the rank and order of which had survived the feudal times। Okay, privileges granted to one class of person on grounds of gender, color, creed, or religion, and widely regarded as irrational prejudice which fall contrary to the principle of the equality। ठीक है, मतलब ऐसा हमारी सोसाइटी में जैसे देखते हैं ना कि सबको इक्वल प्रिविलेज नहीं मिलता। जैसे कोई बहुत पैसे वाला है तो उसको देखिए कहने को तो है इक्वलिटी, बट अब अंबानी खड़ा हो, एक कोई छोटा पान की दुकान वाला खड़ा, who will get more privilege? Obviously अंबानी। सो वही चीज यहाँ पे जो बोल रहा है वो उन्हीं सब चीजों के बारे में बोल रहा है कि विच इज एब्सेंस। ओके, कौन सी चीज ये ठीक है, रेस्ट्रेंट, आइडियोलॉजी, कॉम्पिटिशन, ये सब सारी चीजें हैं, बट प्रिविलेजेस नहीं है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है privileges। Okay, so the answer is A। I think last question for this video and as well as for the preamble। Constitutional government means, ठीक है, what is meaning of constitutional government? A representative government of nation with a federal structure, a government whose head enjoy nominal powers, a government whose head enjoy real powers, a government limited by the terms of the constitution। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो मीनिंग होता है, इट मींस अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
Answer is D. Constitutional government or constitutionalism defines the government authority is determined by the body of laws or constitution. Although constitutionalism is sometimes regarded as synonyms for limited government, that is only one interpretation and by no means the most prominent one historically. ठीक है, तो देख लो इसको, इतना जरूरत नहीं है इस चीज का, बट अब इतना समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है, इट्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो हमारा जो भी गवर्नमेंट आती है उसका जो टर्म होगा, देखिए टर्म से मतलब वो उसका फर्स्ट बोलते ना कि गवर्नमेंट 1.0 2.0 उसकी बात नहीं हो रही है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसकी जो सोचने का तरीका है, वो सब कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके हिसाब से ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार गवर्नमेंट में आ गए तो फिर कुछ भी करते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। ओके, द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल, लाइक लेट्स से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, इवन स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, अगर आप बजट पेश नहीं करते हो और बजट ठीक है पास नहीं कराते तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपका एक बार गवर्नमेंट बन गया, मतलब अगर आप बजट नहीं पास करा पा रहे, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, जो भी वहां पे MP MLA चुन के आए हुए हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पास नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली अगर देखिए मेजोरिटी है तो डेफिनेटली पास हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी है, कोलिशन वाली गवर्नमेंट है, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ MLA खुश नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको गवर्नमेंट पे, तो बजट पास ही नहीं होगा। और जब बजट पास नहीं होगा तो जो भी रूल कर रहा है he has to resign, he or she has to resign। ओके, सो ये चीज क्यों है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं अगर मेरी गवर्नमेंट बन गई तो मैं बजट नहीं पास कराऊंगा, ऐसे 5 साल रहूंगा, ऐसा नहीं। दिस कैन नॉट बी डन। ओके, तो टर्म्स का मतलब वो है, वो नहीं कि टर्म्स मतलब आप कितनी बार चुन के आ रहे हो, दैट इज नॉट द मीनिंग। Okay, so you have to run the government like which is given in the way which is given in the constitution. Okay, so I hope you get the idea of what this question is saying. Okay, तो UPSC वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आई विल नॉट से टेढ़े, बट उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, आप जो पढ़ते हो ऐसा नहीं आएगा कि ना व्हाट इज आर्टिकल 21, एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट टाइप में होंगे, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे। आई विल नॉट से दे आर वेरी टफ, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा दे आर वेरी इजी। वो टफ और इजी के बीच के होते हैं, तो उसमें आपको जो जानते हो आपको थोड़ा सा सोचना होगा उसके बारे में, और फिर यू कैन लैंड विद द राइट आंसर। सो फाइन, सो thank you. Oh, sorry, one more question is there. I was thinking this is the last question. Anyway, we'll finish with this. Which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already exists in our constitution, country. Social equality is a guarantee in the constitution. None of these, none of above. तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये प्रियम्बल में दिया हुआ है, सोशल इक्वालिटी इज गारंटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल की में ही दिया हुआ है। ओके, सो द आंसर इज सी, सोशल इक्वालिटी हैज बीन गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू इक्वालिटी इन आर्टिकल 14 to 18। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एम टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी 14 से 18 में दिया हुआ है। ओके, that is called right to equality, and obviously preamble में भी दिया हुआ है, that is called social equality. Okay, so this is the end of preamble chapter. We'll start new chapter with the other developments. Thank you.